क्या लगता है क्या होगा एंडिंग ऑफ द ईयर 2024 people's finding ना Very good. You just stand up or Vishni also? Vishni gives what? Say after good evening, sir. Do not get it. Good evening, sir. And what my dear girl, what are you doing there? I didn't do it, sir. I didn't get it. Where is he? Apps. There. क्या क्या मीडिया और भाई let's see right I like last time you did not allow me to give I'm ready but hold me to the family it is another the chapter I completed is volcanoes I have to start with earthquakes completed so volcanoes I need to start completed yeah right yeah कहाँ गया ऐसा बोल हाँ बहुत अच्छा गया पर मैंने कुछ पढ़ा नहीं समझ बहुत बहुत अच्छा I gave it 9 out of 10 I gave it 7 you got a mark I gave it I'll give you my name hey guys volcanoes are completed earthquakes are completed then I have to go weathering are you absolutely right if do good we'll finish the portion early can we have then we release it immediately should be then can we have revision why not you are the master आप जैसे बोलेंगे हमको ऐसा मतलब आना पड़ेगा ओके कोई काम करें आज का लेक्चर भी बिना नोट्स का थोड़ा सा यस कॉलिंग एंड टेक्स्ट बुक है क्या सबके पास सब है निशान आप तुम्हारा जो सर्टिफिकेट है वो आपका कोई रिपोर्ट का ठीक है सीख योर फ्रेंड वन डे दे बोल दो हां दैट इज इट्स लाइफ साइकिल सार्थक को चमक रहा है they for you I don't speak English as yeah example take out your textbook to take number 20 now textbooks आज कितने बस आज मॉर्निंग का बस मेरे पास ही था बट वो लाया नहीं इनको कितना सीधे ना कर ऐसा ही तो एक काम करो आइडिया में काटे ए गाइस आइडिया में काटे इससे first of all we should understand the word
weathering. Weathering. Then we will go for types. If I say weathering, I have to ask you soil resources. Is soil formed very slow process? Yes, sir. So when I say weathering, I can show you a big boulder rock, something much bigger than this. And look, what are these? Cracks developing. You can see much bigger than this building also. Then when cracks develop, this becomes hollow. Stone बनता है जैसे. फिर ये बड़ा जो stone है, again weathering, है ना? हाँ. This becomes gravel. Then becomes then becomes stone. Then becomes sand. And then becomes pebble. Pebbles are weaker side. Now the entire process I'm referring is weathering. So how do you put it into lines or words? What is weathering? Breaking up bigger boulder rocks into smaller stones, gravels, and finally to soil. Weathering is the process of breaking down a large block into soil. Directly soil. Due to natural Agents. Due to natural agents. Who is that? Rain. Huh? Rain. Natural cycle. Because of the natural cycle. Listen, very simple. Now, if I say weathering, we have three main types of weathering. First, mechanical weathering. Correct? Then second, physical weathering and two mechanical weathering. Then we have chemical weathering. Yeah, actually, दोनों same ही है. Then chemical weathering. Why? And finally, we have biological weathering. The biological weathering. Mechanical or something. What is mechanical according to you? Normally, it happens in very hot climatic conditions. Like deserts. Yeah, desert definitely. During daytime, high temperature. What will happen to the rock? Expand. During night time, they contract. Cooling. Correct here. So alternative expansion and cooling of rocks due to high temperature. What will happen to the composition of rock? It will become weak हो जाएगा. And as I said, if you remember, soil is a very slow process. Imagine a big boulder rock might take millions of years. 100 maybe, 200 maybe, 300 मैं मर गया. 100 million भी मैं जिंदा नहीं रहूँगा. But geographers say that it is a very slow process. So out of the so many, which is most important according to you? I think this is, but it depends on the climate. It depends on the conditions. Depends on the rocks. Like I always believe, what kind of soil you get depends on the parent rock. What kind of fruit I get depends on. मेरा पापा बहुत कुछ चला रहा है बहुत सारा पर तो मेरी मम्मी को बड़ा एडवाइस करती है देखो डीएनए कैरेक्टर अलग है आदिश कैरेक्टर अलग है वेरी फ्रैंक आजकल के बच्चे ना मम्मी से मिलते हैं ना पापा से तो अलग ही वो अलग है बिकॉज़ दे हैव एक्वायर्ड क्वालिटीज right what did he say best actor not even close to its forward. So we always believe this mechanical weathering, it's like you. So but when you are exposed to inside and outside environment, then you react accordingly. Huh? So I might have 1 to 5 times at both systematic or then 5 to 6 ऐसा friends मिलाना सर फिर progress find होते हैं 7 to 8 तो पूछो ही मत 9 to 10 तो मैं हमेशा बाहर ही रहता हूँ बोले क्यों रे ऑक्सीजन की स्टूडेंट
कभी गेट कभी गेट के बाहर, कभी क्लास के बाहर, अभी तो स्कूल के बाहर ही कर दिया। मैंने क्यों? बोलना उसका ही। चलो तो एक बार रिक्वेस्ट के तो आई मत तो घर पे क्यों? तब उसका भी थेरेपी से लगा नहीं था। अच्छा नहीं सर वो चलता है सर वेरी फ्रेंडली। I attended one of the ceremony I introduced the last week. Geography principal who was giving special prize to that बच्चा एक इतना नौकरी का फिर कैसे वो निकला टॉप है वो अलग है यार. I think these students are the best example to understand कि हमारा आगे का सोसाइटी कैसे बनेगा. ये बोले कुछ नहीं करने के साथ. अच्छा. मम्मी को 8:30 के पहले मुझे फोन कर देती है और मुझे भागना पड़ता है. आज अगर बचा बच्चा फोन डॉक्टर में जाएगा. लड़की की तरह मम्मी कंप्यूटर की तरह कंप्यूटर भी है. अगर बाजार तो आई थे मेरे से कुछ पैसा लेके. So we always believe this mechanical weathering is purely a which condition. Which condition? Climatic. Why it is mechanical? Expansion, expansion, contraction. Then what is this physical? Then let us do chemical weathering. What is chemical weathering according to you? Chemical or put it off. There was good time when the chemical or have you heard this rocks decay? Rocks के ऊपर green color का fungus जैसा बनता देखा है? Especially when it is moist और especially within the rainy season. और इसको हम लोग बोलते हैं कि rocks के ऊपर भी acids का असर होता है, acidification. फिर हमारा वो हिंदी का पोएम में आज भी नहीं बोल सकता कि वो कौन सा एंड चलती है वो गलती है करके ये कहीं पर हाथ पे और वो मतलब 70 में भी लकीर गिर रहा है. हमारा बच्चा मेरे पर चढ़ाना सर जब इतना बोर्ड का है क्या बोर्ड पे तो ना ऐसे कहा है ये वो सेकंड का बट वो नंदी चलती फिर हमारी क्या स्कूल में भी वो लाइन आ जाता हमें कोई लाइन नहीं आता कोई चलो ये ruthless criminals है ना भैया अरे ruthless criminal what is that word meaning? दया जो दया नहीं सिखाता ऐसा वाला दया को क्यों देखते हैं क्राइम पनिशमेंट करते हैं. We always believe this weathering depends on the moist condition. Depending on the tropical क्या बोलते हैं जहाँ everyday rain होता है. Do we have such regions? Yes, we do have. Equator. हाँ, मतलब equatorial type of climate. 4 o'clock day. 4. Now then, this one he was asking, what is biological? Many animals live inside the ground, burrowing holes. आपका टेक्स्ट में वही पिक्चर करेगा ना ठीक है. Burrowing animals की वजह से. Then you might have seen big banyan trees. Their roots, है ना? Getting into the rock structure, earth structure, they have borders cracked कर देता है. सबसे बड़ा biological हम ही है. सर हम क्या सर बिल्डिंग बांधने के लिए कितना फाउंडेशन हम लोग खोदते हैं. So many rock structures just blasted. Okay. So the most active blast करना पड़ता है ना तब जाके वो खड्डा बनाता है. बढ़िया है. And then it is reached biological weathering cracks the rocks. So all 3 types of weathering will be studied. Understood? So write in your notebook the basic rules they are writing that we have this chapter using the problem. Pick up 91. I get whatever the notes. Last week next for बहुत short notes there are and very अच्छा notes to you. Very good notes है. Weathering means एक काम करो weathering की पूरा मत लिखो capital का सिंबल. अच्छा ठीक है. एक जरा काम करो. Weathering refers to a slow
a very slow long process leading to a disintegration. On the spelling of disintegration or breaking away of bigger boulder rocks in stones, pebbles, gravels, and finally soil. Either nice one. When we are going to do physical weathering, there are three subtypes. I think आपका textbook Morning Star रहेगा तो same picture रहेगा. One is block disintegration. Second is granular disintegration, and third is a special effect. I don't care. ये थोड़ा colorful है. Why? Medium. So according to you, if you look into this diagram, now tell me what is block disintegration? Complex. Where the rocks are weathered, but in a block. ये तो geometrically बोला है. But exact geometrical नहीं रहेगा, but blocks का weathering रहेगा. Are you seeing weathered rocks? In the form of blocks. But this is very common. What is granular? Sir, ऐसा round रहेगा. Granules के तरह. This might lead to soil formation very quickly. ये थोड़ा time लगेगा. Just to blocks है ना, और further फिर disintegrate होना. ये थोड़ा नया है. What is exfoliation? ये exam में बार-बार आता है. Anybody tell me things in the book or looking The breakdown of the outer covering of the rock, slowly going towards the middle point. Okay. Because this is the third one. Okay. What is first one? Block disintegration. What is second one? Granular. ये दोनों थोड़ा सा easy है, but to understand this one, I feel we use the right word. The rocks appears like peeling up of top layer of the rocks. Top layer. अभी ये इसका example हंसेगा. It's like onions. When you peel up the top part of the onions, वैसे दिखते. ना वो ये भी है, physically है, actually sorry. But ये ऊपर का जो part है ना, ऐसा लगे ये किसी ने peel off कर दिया. Correct. So this in exam they will ask you separate question. Come on, repeat after me. What is exfoliation? Peeling up of rocks, top layers, closer, मतलब looking like an onion peel. और ये कोई special action है. Why special action? Because very few areas you will see exfoliation. I don't know whether you have gone to that southernmost tip of India. Yes. So, Kanyakumari is southernmost. You can collect stones of different colors, different shapes. I don't know, you don't know the mythological story behind the word Kanya and Kumari. I'll not put that entire story. Kanya is good, Kumari is also good. Kanya is like Married woman. Kanya is like a bit older. Like mythological story where the Raja is given the task to marry that particular dancer. What is before the cock makes the first noise? What is that first? Or what? Morning sunrise से पहले उसका शादी होने का वरना that first will not marry. So that is that place that Kanyakumari is still worshipped in the name of that lady goddess. So बोलते कि रातों रात वो राजा ने पूरा इंतजाम किया, but I think विष्णु ने नारद को बोला गया to take the form of a cock and 4:30 बजे जाके
ये लगा दो. So that that girl with her promise, she comes, goes and lives with that particular sea. That is, you know, that now all three seas are meeting point. Indian Ocean, Arabian Sea, and Vivekananda probably the lake. So no, नहीं होता उधर ही उन्होंने बैठ के मिलती है. और rock के नीचे बैठ के उन्होंने टाइप पे आपको करने के और body this lady took a dip and she went inside the shrine. RPO lady, look at the name of the place. Kanyakumari. Yeah, this is track. Understood? So there I had heard a exfoliation of rocks. I haven't gone to the name. Many times I went to like the cheap and sat talking about Chalandana, about that. So from Coimbatore we go to Kerala by road. So this is that area. Which place? Exfoliation. Samajh mein aaya? Absolutely. In exam they'll ask you what is block disintegration, what is granular disintegration, and what is exfoliation. It is all under directly. So then write whether you can then write one small word sentence, then we'll go into type. Not small word, characteristics. It's short for this. Characteristics. Yeah. I was on saying student. I take the time. Right solution. Simon is oh, it's a. No, I like that. I am उसको क्या है नहीं दे उसकी मां weathering but characteristics point number 1. Okay, sir. Then there's a side point number 1. Disintegration, decay, disintegration or decay of solid rocks. You find it helps. Disintegration or decay of solid rock. Because I cannot know this is possible. When I was working there, I see it. And then and majority time government recognize progress. And Japan market but that I know allowed me because I started the show. It's so beautiful. It's particularly what to about the well, what's the बचपन में ही है now the साल में government talks for US or equal and yeah, with India, not this nation yes, I think the Japanese
सुदर्शन जैसे उसका लोग क्या मिलेगा ये लगता ये बंदा जापानी लोगों के शादी करने की सब सब काम है वेरी स्ट्रिक्ट टू दिस तो क्या आज भी जब उसका पापा जाता है मैंने बिग मिस्टेक तो लगता है कि आज कल्चर पर है कल्चर को अमेरिका में बिल्कुल आप वेजिटेरियन हो I don't want to eat. वेगान मतलब ये क्या पर मेरा मेरा सुनी ठीक है I want to follow that thing and that is very good for your health दूध और आप मेरा किधर से किधर so छोड़ basically क्या है इधर को करके बहुत सारी things if you have a cow of your own is a now हाँ सच बोल रहा हूँ गाँव के लिए एक को खरीदने लेके जब कोई जाएगा साले को नहीं जाएगा थोड़ा better do अभी आप आरएनडी कॉलेज में जा रहे हो क्या करते हो वो बिल करने का बिना तो लेकिन जितना क्वांटिटी ऑफ ब्रेक मुंबई में आता है एंड जितना प्रोडक्ट होगा उसका 10 गुना ज्यादा होगा उसको बना एक कैसा बना अरे डालिए वॉशिंग पाउडर हाँ शैम्पू भी तो देखो हमारा जो पैकेट को से ई निकल जाता है 7 साल में तीसरा निकल जाता है और ये एक तो क्लास का बहुत पॉपुलर है कौन सा ये तो the participation is solid is small इसका जो गाय का चारा है बहुत महंगा आता है और वो क्वालिटी का I don't think that we go add ये अमूल एक्चुअली का मलाई मलाई ऐसे शुरू कर दिया कोई भी बात पानी डाल के तो the main scheme can distribute on many देखो 2-3 हजार का माल पड़ेगा बहुत बड़ा स्कैम निकलेगा चलो second point interface is surface of equal ये ऑपरेशन में इंडिया में हुआ था affects the surface of equal काम जो दे रहा है आपके लोग बाजू में अरे उसने बोल रहा है तो मैं हाँ बहुत जरूरी है मैं बोलता हूँ तो काम कर देता नहीं हाँ आपकी तरफ इसे जुटते थे whether it is affected by ये क्या है I want to see you it is affected by climatic conditions and composition of climatic and climatic conditions and composite aspect of this group so नहीं अभी मैं देखो पेट्रोग्राफी से पता करता है वो दूरी तो उन लोग का कोड है देखिए एक फोर इयर्स के लिए जुरासिक पार्क अच्छा और नया वाला मतलब लोग बोल रहे हैं कि हम लोग एक्सपेरिमेंट को कैसा करते हैं और ये आज हम कैसे कंडीशन की बात करें तो कंडीशन के बाद and the composition of the rocks. Next one. क्या है उसमें
Right? It leads to soil formation. It leads to soil formation. At the perfectly 30. So, 86. So let me. इधर है. इधर. Next one. Involves several processes. Next point. Involves several processes. Relax. Take your finger. I want a cleaner handwriting. Several processes of desegregation. एक ही स्टेट में रॉक से सॉइल नहीं बनती. Next. Weathering changes. Hard acid rocks. Hard acid rocks. In finer materials, particular soil. In finer materials. Is that right for you guys? Last one. It prepares. It prepares rock materials for transportation. Let us go into that. And what I do, I will only explain to the line that take you to mark. Okay. I'm reading page number 92. I'll look again and explain from here once again. Regardless of the type, all three has one thing in common. What is one thing in common? The formation of soil. Okay. What is the second thing? They are made from rocks. Okay, soils are all. The third thing, what I want to say, it all depends on the climatic conditions. There are certain rock structure in certain parts of the world where even today, CA3 का caves बोलते हैं, stalagmites, stalactites, सुना है? हाँ. Roof पे cleaning होता है, ऐसा लगेगा आपके सर पे गिरेगा. हाँ. सालों साल वैसे ही है. Even that has been eroded, but that I cannot call it as weathering. No, it is not weathering. Second, the water has made some features. You know, features are BBA. They say we go to a place called Malaysia, not a place, it's a country. There's one big caves. South Indians go for big temples there. Kartikeyan temple hai. उसको हम लोग पत्तू caves बोलते हैं, पत्तू. And in Malay they call it पत्तू, PAT. The cave is so sharp and deep. आज भी वो calcium carbonate का rock structure वैसे ही है. So देखो ये weathering has only made possible that you and me are having soil. So did it start today? It might have started millions of years before. And what does it adds to me and you? Soil. Is soil created by you and me? But it's definitely destroyed by you. We don't destroy the soil, we destroy its elements. We make the soil fertile to infertile. कहते हैं ना? Fertilizer, pesticides, chemicals, so the more you are making the soil infertile, the more you are in a soup. What is that soup? You are in a soup. So that's a phrase in English. Where you see the trouble for you to grow crops will be the muds. Unlike this, NASA keeps telling that we can grow crops on Mars. Mars का एक मिनट soil तो लेकर आके दे. है ना? It is not suitable. We always believe this three weathering.
has definitely added to the soil. So पहला condition, it is climatic. दूसरा condition, the parent rock. Like in Maharashtra, we have black soil. You know that, na? Which two crops supports black soil? One is cotton and other is sugarcane. And let me tell you, both are out of a rock which we call it as igneous rock. So even onions. Onions also, correct? Not onions, onions. Onions. I said it last. Thank you. I only said. So we always believe every rock disintegration leads to one Even or the other formation of soil. And whatever nutrients are there in the rock, short that you will get it in the soil. So we are going to write only the details, heading, what is it, then we'll mark it in the whole. Correct? So first you write types of weathering. First physical weathering लिखो, then bracket में mechanical लिखो. So first you write physical weathering. Inside the bracket you write mechanical weathering method. Now only W that. Did you? Is that type of weathering? Continue with the headings. Which is mainly due to alternating or alternate, Weathering. which is mainly due to expansion and contraction. Mainly due to alternate expansion and contraction of rocks due to high tilt. So, next point. During daytime. Yes. So. Thank you. Thank you. What did I say? During daytime, the rocks expand, and during daytime, during nighttime, क्या होता है? Night contract, stone contracts, rock contracts. Contracts due to cooling. Next. This leads to weakening of the rock's composition. Which helps in easy disintegration. And the last sentence. It's more suited. It is more suited in a hot, dry, desert condition. Am I getting the right word? Hot, dry, desert condition. तो ये weathering कहाँ होने का chances है? मतलब Western Rajasthan, है ना? Hey, if I ask you, does it happen even in the cold desert? Yes. वहाँ से expansion हुआ. Contraction तो है ना? Expansion में तो नहीं होगा. बिल्कुल नहीं तो बोला होता है. उधर के chemical weathering ज़्यादा chances है. क्यों? हाँ,
because the rocks are under the snow. Correct. So So when snow melting, it might dampen the rock. Correct. So whenever we talk about the desert, na, we never say it is only a hot desert. Do we have cold desert in India? No. We No. actually कश्मीर का कुछ regions को बोल सकते हैं, but they are not actual deserts because वो normal season में हो जाता है. But कारगिल है, द्रास है, जहाँ साल भर का टेम्परेचर -14 से लेके -36. -45 जाता है. 45. 45. And there is, हाँ, India में है. Wow. And there is our, military people are stationed there because China always gives trouble to us. And let me tell you, whoever is stationed there for 6 months ना, उससे ज़्यादा उनको उधर posting नहीं देते हैं. They have this brain related issues too much. तो मुझे याद है जब मैं वो ऐसा करते करता था, कहीं भी देखने का ना सिर्फ स्नो ही दिखता है, व्हाइट कलर का. And I don't even touch the snow. मैं चलिए मुझे फीलिंग है. क्योंकि मेन रोड में तो वो स्नो इधर आता है, वो ठीक होता है. मतलब अभी समझ लो ये मेन रोड है and my house is somewhere here. So I have to walk this inside. नहीं है. So I have walked up till my knee level snow, and 99% I never used to wear the snow shoes. जब snow आते हैं घर से डाल, तो ये खरीदो, फिर ये फिर पता नहीं क्या क्या. I used to have a normal kind of a good glove, but definitely in the morning university पे जाता था ना, I never used to wear the gloves. अरे मेरा एक father से ज़्यादा loss होता है, because मेरा कुछ अमेरिकन people को तो खा भी से मैं हमेशा नहीं करता, तो बहुत हेल्पफुल है. तो मैं क्या करता था 10 मिनट तक ना मेरा हाथ ये सब वो 6 लेयर पहनता था, ये करता था. I purposely used to keep my hand in the gloves to see what's happening. Hardly it would take 5 or 10 minutes. After 10 minutes, you forget that your hand is, मतलब ये palm है. इतना ठंड हो जाता था ना ऐसा लगता है कि कोई काट दे. मेरे को फटाफट ऐसा था करके फिर ग्लव्स वगैरह पहन के फिर मेरा फैमिली को क्यों ऐसे कर रहा है. First winter I remember I lost almost 12 kg. या तो ये टोरंटो और या तो फिर खास. टोरंटो फिर भी ठीक है, -7 -8 में रुक गया. मेरा कुछ फ्रेंड्स विनीपेग और ब्राम्पटन, बिनी sorry, the temperature directly falls from 10 to 0, 0 to 20, 20 to 40 minus. And उधर बोलता था कि पानी का सप्लाई का फट जाता था, थोड़ा रूरल एरिया से इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहता था. टोरंटो में भाई बहुत सारे जब तक मैं था वो थी सर, अभी ये पानी का पाइप फटने का प्रॉब्लम नहीं होता. मेन सिटी है ना, प्लस और इलेक्ट्रिसिटी कभी नहीं था. एक बार मेरा बॉयलर बंद हो गया हीटर. Oh, that was a day it was -4, not day night. मैं कॉल में लैंडलॉर्ड सारा ही घर में कुछ कर. सॉरी सर भाई छोड़ो मत, अरे ये मत जाएगा. तू प्लीज भाई, मुझे मालूम नहीं है अपडेट करके बुला, वरना मैं नहीं मालूम तेरे नाम से बात कर. तो भाई फिर मैं जिंदा रहेगा ना सब करते. ओ यू wait तो कोई तो बेचारा देख लो तुम देख रहा. तो सिटी स्नो आई हैव फिर मेरा स्टोर रूम लेके गया. स्टोर रूम आके 9 फीट का है, मतलब वो बॉयलर तो टॉर्च पकड़ने को स्टोर कंडीशंस प्लस टेम्परेरी में खिड़की लगा. अगर आप ये चले कल सुबह में मेरा जिंदा रहने के लिए तो चले गया ना. तो बॉयलर आके रिलायंस कंपनी बनाता है. तो पहले वो सारा इक्विपमेंट पूरा गंदा है. आदित्य बिरला का कंपनी है उधर एयरपोर्ट के नजदीक, पूरा इन्वेस्टमेंट है, पता नहीं कहाँ कहाँ पे. And you know what is a boiler? You know, understand what I'm saying? Yes. के अंदर वो पानी boiler को steam को पूरा क्या बोलते हैं? Even in toilet we need a heater, वरना तो उधर भी तो बैठ. हाँ, उतना ठंडा है. Steam. And you know their walls are like this. ये अंदर का wall है और ये बाहर का wall है और बीच में पूरा वो क्या बोलते हैं? Damping. Temperature वो नहीं ले. हम लोग जो काट के बनाते हैं ना प्रोजेक्ट के thermocol बीच में. And walls are not made out of this. It's normally made out of wood. Yes. And अगर आग पकड़ना हो तो very easy. तो मुझे आज भी ऐसे दिवाली पहली बार हम लोग ने मनाया. तो मैंने हाँ वरना तो सिटी में से बनेगा तो खतरनाक था.
इतना हीट नहीं No, but wood में wood खराब हो जाएगा ना. सर मेरे को Voice उनका ट्री का सिंबल ही बिल्कुल तरह नहीं पर इवन स्ट्रीट लैम्प वुड का बना ये तो आसे because the wood है बहुत you know ना lumbering jacks can are very popular हाँ wood उधर बहुत मिलता है तो why I'm saying all this look at the temperature उधर भी weathering chances है उधर भी chemical biological सब होता है but one thing is sure that government ensures ना आप अगर 911 कॉल किया पुलिस या एम्बुलेंस का hardly 2 minutes के अंदर 4 गाना चार. and they will ensure that problem क्या है and I still remember एक बार नाइट में मैंने कॉल किया था रात को 2:30 बजे मेरा हेल्थ वाज नॉट सपोर्टिंग बुलाया नहीं आया एग्जैक्ट 7 मिनट्स में एम्बुलेंस आता and they came and check बोला नहीं वो आपको पहले बार आया ये दिन तो सो भी तो अरे तो फिर मुझे लिस्ट कर मुझे हॉस्पिटल लेके जाओ ठीक है हम लेके जाता है बट आपको उधर भी जाके जो दवाई देगा वो मुझसे अच्छा मैं आपको मैं फार्मेसी से नहीं दे देता तो सर आप नए नए आए हैं ना वाई बिकॉज मैं नहीं करूँ तो से 9 महीने से 12 महीने से और ये हॉस्पिटल है 15 किलोमीटर में आप क्यों आ रहा है आपका ड्यूटी दिख जाएगा तो फिर उसी पे ऐसे दवाई का फिर खुद लेके गया गैस स्टेशन ओनली वाटर हमारा पैसा है तो कैसे जाएगा टैक्सी करो एम्बुलेंस में वो नॉर्मली अगर हॉस्पिटल लेके जाएंगे तो लेके देन मैंने बोला तो फोन लगा के मैं तेरा सुपीरियर से बात सुपीरियर वाज वेरी हैप्पी टॉकिंग टू मी अबाउट द इंडिया का तो यार तेरा इंग्लिश में अच्छा बोल रहा है एक तो हमने चैनल्स का आई वेरी क्रूज काइंड ऑफ देखो इवन द alien foreigners try to help you when he came in he's 6'2" and he's so and पूरा वो dress was पहन के shoes भी नहीं था मतलब सर सर no sir we are allowed to enter in the shoes so I am saying when you're going foreign countries now be very happy and be very friendly with them ये मैंने देखा मतलब गुजराती और पंजाबी लोग पंजाबी में तो इंग्लिश को उसके साथ बोलने में पड़ता है गुजराती चल फिर भी बात करो in India all the way there might be your and I never used to and they used to ask me are you from India which part of India I said Mumbai oh very good but Toronto is very good in Mumbai क्या करेगा और इधर से मेरे फ्रेंड्स और वाओ और क्लाइमेट उधर वाओ क्यों मरने के लिए one thing is good that people are very good and क्या बोलता है मैं बहुत बार स्नोफॉल के टाइम से गया कोई भी कार उठता है मैं बोला किधर जा रहा है मैं बोला मैं डाउनटाउन जा रहा हूँ यूज के साथ अरे क्या गेट इन द कार तब तक डर लगता था सारा एक दिन ना ये परफेक्टली टेक मी ड्रॉप देगा पूछेगा मनी नॉर्मली विंटर होते कोई भी रोड पे नहीं चलेगा नो वॉकर्स आइदर कार और टैक्सी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर इतना गर्म हवा रहता है ना आपको लगता है कि बाहर उतरते एग्जैक्टली विंटर मुझे ऐसा बात है मुझे ऐसा लगता है कि वो लाइफ में कभी जिंदगी में दोबारा नहीं थी ठीक है चल राइट did I complete physically weathering Yes, sir. second one उसी का A डाला B डाला 2 डाला 1 डाला Point पे डाला 1 डाला हाँ तो 1.1 is block disintegration क्या? अंदर फिजिकल क्या block disintegration हुआ क्या sudden rise and fall of temperature leading to expansion and contraction resulting that breakdown resulting their breakdown second point same heading temperature leading to their breakdown
Sudden rise and fall of temperature. Yes. Okay. Next. Splitting up of rocks. 1.2. 1.2 में points are good. ठीक है ना? है 1.1 is getting at the block disintegration. What did I say? Splitting up of rocks due to tensional forces in the form of blocks. Is what is it? Block disintegration. Now 1.2 granular. Yeah, continue. Different rock materials or minerals. Different rock materials or minerals present in the rocks. Which during weathering leads to granular, careful, huh? Pieces, especially in cold places or at high altitudes. Especially in cold places or at high altitudes. And why they are referring at high altitudes? What does high altitudes means? High height. Mountainous region. I say English to next and the last sentence. These cracks and joints. Are filled with water during daytime, which at night time freezes. समझ में आ रहा? तब ये वैसे दिखता है. Which at night time freezes. And expands. And this action is called frost action. Leading to granular degas. What is granular Disintegration. Next one. Protection was there in last one. Now exfoliation. I'm afraid we have time for explanation. No. Writing my 5 minutes. As the acknowledgement again. Next, the special type of disintegration. Which is seen as peeling up of. Careful, huh? The word I have written on the board. Peeling up of डाला. Which is seen as peeling, E-double-E-L-I-N-G. The top layer of a
log due to sudden temperature change. Due to sudden temperature change. Hence, exfoliation or EX डाल दो, फिर apostrophe M डाल दो. Are observed in specific climatic conditions. The homework which you must do next time, next week, whenever we are meeting, I'll finish this chapter. I think we are going to great speed. 10 and enumeration. Page number 98. Question number 3 and question number 4. Okay. This you must do in complete and for all your school exams. I hope we are easily ahead of your school exam. Yes. Motion wise. And any maps are to be taught any of the schools because ये 9th में क्या है ना world map. Okay. And अगर आपको अभी अगर चाहिए ना देखो last पे है जाओ ना these all 6 maps ना I will doing maybe like few days or something like that. But अगर आपको किसी स्कूल ने बोला है कि टेस्ट में मैप आ रहा है you let me know पहले because world map है ना आ रहा है क्या बताया which chapter में कितना मार्क्स का है Does not. नहीं आने वाला एग्जाम में No. सब है Are you able to? Yeah. How about your school? Same school. Map work very able to do. Yeah. वो हर एक चैप्टर में से रैंडम थोड़ा- प्लेसेस ये करते हैं और ये फिर तेरा स्कूल का बोले थे अभी तक कुछ भी पता है और वो एक जगह को पूरा एक डेफिनेशन में कन्वर्ट करते हैं और वो डेफिनेशन के हिसाब से हमें गेस करना पड़ता है और उसको हाँ वैसे ही होता है हमारा डेफिनेशन डेफिनेशन एक टाइप तीन वर्ड होता है फ्रेज टाइप उससे रिलेटेड वो नाम होता है ठीक है जैसे गंगा रिवर रिलीजियस रिवर ठीक है ऐसे रहेगा अच्छा Longest- डायरेक्ट क्वेश्चन बोलना यस ये क्या फ्रेज दिए तो फ्रेज कैसे वाली वेस्ट में ये बस बोलो वर्ल्ड टाइम प्राप्ति ये दो ही है इंडिया का ना तो वर्ल्ड में किधर मैं तो वर्ड में बोल वो अभी गंगा किधर है लॉन्गेस्ट रिवर नाइट तो वर्ड में आ गया वैसा मैं प्रैक्टिस दूं क्या आपको अभी नहीं बात अभी नहीं की you tell me well before your exam because math work even in 9th and even in 10th I have to teach you specially because it is of 10 marks. I did. 10th will be here. अभी भी 10 पे ही है Great. I'm leaving you. है ना? चलो चलो चलो. I'll see you and do very well study. Huh? I want full marks in school exam as well as in UT. UT what was the last test?